Balarama conducted many pilgrimage tours and visited all the holy places of Barada at a time when the Pandava Kaurava war was in full swing. Balarama was of opinion that it was unjust of Bhimasena to have killed Duryodhana and was about to kill Bhimasena. Once Balarama spoke in extolling terms about the secrets of Dharma. It was Balarama who performed the obsequies of Abhimanyu. He went to Hastinapura when Yudhishthira performed the Aswamedha Yaga. Aswamedha Yagna. This is a small yagna which we are doing for Lord Balarama. This is a mini homam. Aswamedha Yagna is a very big homam. It will go for years and years and it will definitely bring the kingdom to anyone who does Aswamedha Yaga. That's why in ancient days Aswamedha Yaga is being performed to get the kingdom, to get the regime, to become the king. So now we are going to see the Balarama going to be invoked in this Agni. Already the Ganesha Puja is over and we have Kalasa Avadana. We have invoked Varuna as Lord Brahma, Vishnu and Shiva in the Kalasa, and we have already invoked Agni in this. Now we are going to witness Lord Balarama in this Agni form, and you want to get the blessings from Balarama. So please watch this homam. Please pray for you and your family that you will get whatever you want from Lord Balarama, who is being invoked in this Agni. And we also invoke Mahalakshmi as we said before. So both of them will give you blessings. இந்த பலராமனுடைய அவதார ஹோமத்தை மிக சிறப்பான முறையில் எல்லாத்தையுமே எடுத்து கூறிவிட்டார்கள். அதாவது பலராமனுடைய அவதாரத்தினுடைய நோக்கம் கிருஷ்ண பகவான் சரியான முறையில் அவதரித்து கம்சனை வதம் செய்ய வேண்டியது என்பது நோக்கமாகும். அதனால்தான் மிக தந்திரமாக திருமால் காய் நகர்த்தினார் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது. எந்த ஒரு காரியத்தையும் சூழ்ச்சியால் தான் வெல்ல வேண்டும். அந்த வகையில் கிருஷ்ணர் எப்படி பிறப்பாலேயே சூழ்ச்சியாகவே பிறக்கப்பட்டவர். அதற்கு முன்னதாக பலராமர் அவருக்கு அண்ணனாக முன்னாடி அவர் சொன்னது போல் யதுகுல வம்சத்திலே வசுதேவருக்கும் இரண்டாவது மனைவியாக இருக்கிற ரோஹிணிக்கும் அதாவது டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு. அதாவது தேவகியினுடைய வயிற்றிலிருந்து பலராமரை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணது ரோகிணி தேவிக்கு. So as we said before, he is explaining about how Balarama and Krishna is being born. Lord Mahavishnu incarnate himself to destroy the wicked kings, mainly Kamsa, who is very against Adharma, and he killed lot of good sannyasis and good people. So Krishna is incarnating himself. He is a great strategist. So before Krishna is coming, he is sending Lord Balarama to Vasudeva's second wife Rohini. பலராமர் கிருஷ்ணருடைய அண்ணனாக இருந்தாலும் குணத்திலே மாறுபட்டு இருந்ததினால் இருவரும் மிக பாசமாக இருந்தார்கள். ஒருவருக்கொருவர் பாசமாக இருந்தார்கள். பலராமர் துரியோதன பக்கம் இருந்தார். அவரை பல புனித நீரிலே நீராட சொல்லி அவருடைய குணநலங்களை மாற்றி அதற்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்க Balarama is there along with Duryodhana, who is the head of Gaurava dynasty. As you know, Pandavas are 5 and Kauravas are 100, and among Gaurava, Duryodhana is the head, who is the cause of the battle of Kurukshetra. So Balarama changed the mind of Duryodhana, asking him to travel to lot of pilgrimages and lot of holy spots. But even though Balarama instructed, the Duryodhana wants to do it because of his change of mind, his illusionary mind, and because of the adharma presiding in the world, and he wanted to do those activities. He is doing mischievous activities, and his mind is already corrupted by his own Sagni. So Balarama is trying to change the mind of Duryodhana
but the battle is happening in Kurukshetra between Kauravas and Pandavas. Pandava side, Lord Krishna is there. Even Balarama is not with anyone, but he just helping Duryodhana to change his mind, to ask him to travel to a lot of pilgrimages. அதாவது வசுதேவருக்கும் தேவகிக்கும் பிறந்த குழந்தைகள்ல பலராமரும் கிருஷ்ணனும் திருமாலுடைய அவதாரம். எப்படி பரசுராமரும் ராமரும் ஒரு சமகாலத்தில் வாழ்ந்தார்களோ அதே மாதிரி பலராமனும் கிருஷ்ணரும் வாழ்ந்ததாக நம்முடைய இந்த அவதாரத்துடைய நோக்கம் சொல்லப்படுகிறது. The other incarnations like Rama and Parasurama has been living in the same time. This like the same way Lord Krishna and Balarama live in the same time. Both are the incarnations of Mahavishnu. They live the same time. இருவரும் மகாவிஷ்ணுடைய அவதாரங்கள் தான். இதில் மிக சிறப்பான அவதாரம் கிருஷ்ணராக எடுத்து கம்சனை வதம் செய்வதற்காக வந்தவர். அதோடு இல்லாமல் the complete avadara, the Purna avadara is Lord Shri Krishna. Krishna is the complete avadara because Krishna is everything, and Krishna form, the form of Krishna is the real form, and he is the complete 100%. If the powers, all the Almighty's power is 100%, you can equate with Lord Shri Krishna. That is the power which Krishna has. He came exactly as he is in the Haridama. So Krishna is coming also with Balarama. இந்த பலராம அவதாரத்தினுடைய நமக்கு செய்ய வேண்டிய தர்மம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்க ஒரு கர்ப்பவதிக்கு ஏற்படக்கூடிய தடங்கள் நிவர்த்தி ஆகும். இடையிலே ஏற்படக்கூடிய கர்ப்ப தடை நீங்கும். If you perform Balarama Homam or you participate in this Balarama Homam, whatever problems you have in the childbirth, if there is any issues in getting any issues during the pregnancy, that will be solved. So Balarama will help you to get your child birth. இரண்டாவது சகோதர பாசங்கள் மேன்மைப்படும். And another big advantage is the relationship between brothers and sisters will increase because Balarama is very fond of Krishna and Krishna is very fond of Balarama. Obviously both are same Mahavishnu. So குடும்பத்தில் உள்ள உறவுகள் மேம்படும். The relationship with the family will be very strong. அடுப்பறை ஏற்படக்கூடிய எதிரிகளால் ஏற்படக்கூடிய அதாவது அடுத்த குடும்பத்தால் அதாவது தாயார் குடும்பத்தால் ஏற்படக்கூடிய சோதனைகள் எல்லாம் நிவர்த்தி ஆகும். Apart from it, whatever issues we are facing, the enemies we have, the Balarama Homam will help you to solve all the issues, litigations or any enmities with your own family friends. Everything will be dissolved with participating in this yajna. Since Balarama is very friendly and very good God. I mean, he is very friendly and he is very close to us all the time. Yes, Lord Shri Krishna is our friend, and Lord Shri Krishna you should treat Lord Shri Krishna. You should see Lord Shri Krishna as your friend, as your companion. Like the same way Balarama is also your companion. The God is so pleasant that if you see the history of Lord Balarama and Krishna, they are very pleasant. When you read when you see the history, you will be in ecstasy. Your soul will be in ecstasy of the miracles they perform, of the love they have with the devotees, with the gopis and the presiding people in Dwaraka and Mathura. It's really very happy to read the history of Lord Shri Krishna and Balarama. They are Purna Avadar. Krishna is the Purna Avadar. That's why when we hear the name of Krishna, the Balarama will be there. And when we hear the name of Balarama, Lord Shri Krishna will be there. So when we are doing this Balarama Homam, definitely Lord Shri Krishna also will come. And we are also going to have Lord Shri Krishna Homam in a few days time. So we are going to do the Krishna Homam in a grand manner because Vedic folks, the main reason for existence of Vedic folks is because of Lord Shri Krishna. So we are going to now do the ahutis. அதனால பலராமனுடைய ஹோமத்திலே பங்கு பெறுபவர்களுக்கு மனசாந்தியையும் சந்தோஷத்தையும் கொடுக்கிறார். So we are praying that whoever is participating in this Lord Balarama Homam will get complete peace, trance and prosperity in your life. So please witness this Homam and pray for you and your family.
ओम भद्रं ददातु भद्रं कर्णेन शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः श्रीरङ्गैः सुष्ठुवां सनोमहे यजेम देवहितं निधायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा सुवेदाः स्वस्ति नस्तारश्वारिष्ठणीमहि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ओम शान्ति शान्ति शान्तिः ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राख्यः सहस्रपाद् सभूमिं विश्वतो वृद्ध्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुषदेवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्चभव्यम् उदावदत्तशेषानः यदन्नेनाधिरोहते एतावानस्य महिमा अदो यायायुष्यपूर्णः आदोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यावृतं दिवे वृणः पादोस्येहाभवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामते शासनानसने अभि तस्मात् विराटजायत विराजो अतिपूर्णः तदालोद्धरिष्यत पश्चात्को विमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषाः देवायज्ञमदन्वदा वसन्तो अस्यासीधाज्यं ग्रीष्म युग्मः शरद्रविः सप्तास्यान्तर्दयः दशपदसप्तकृताः देवादित्यन्दन्वानाम् अभद्रं पुरुषं वसुं तं यज्ञं परिप्रोक्षन् पुरुषं जातमकृतः तेन देवाजयन्त साध्यार्हेच्छये तस्मात् यज्ञाः सर्वभूतः संवृतं राज्यं वसुविस्तारिचक्रे वा यज्ञानि आरण्यां ग्राम्याच्छये तस्मात् यज्ञाः सर्वभूतः तस्सामान्यज्ञे छन्दांसिज्ञे तस्मात् यतस्तस्मात् अजायन्त तस्मात् अजायन्त एकेजो भयान्तः गावो यज्ञे तस्मात् जाता अजावयः यत्पुरुषं यततः कथिताव्यकल्पयन् मुखज्ञमस्य गौ बाहु कावूरूपादा उच्यते ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः गुरुद्वैस्यः पद्यां सूत्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत गुहादिन्द्रः साग्निश्च प्राणात् भाजुरदायत आदि अन्तरिक्षं समवर्तता दालोकान् कल्पयन् वेदागमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं नमदस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्रधीरः नामानि उत्पादनं निदास्ते दाता पुरस्ताद्यमुदाधिकार नामशस्त्रः त्वमेवं विद्वानमते भवति नान्यपन्थाय नायुध्यते यज्ञेन यज्ञमेकन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहणागं महिमान् सन्ति यत्र पूर्वे साध्यासन् देवाः यस्सम्भूतप्रतिव्यरसाश्च विश्वकर्मणः समवर्धतानि तस्य स्तुष्टाभिधतरूपमेति तत्पुरुषस्य विश्ववाचानमग्रेः वेदागमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं नवदत्परस्तात् त्वमेवं विद्वानमृतैः भवति नान्यपन्था विद्यते नाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य लीलात् परिजानन्ति योनिं मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदतः यो देवेभ्यो आदवति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो ऋताय ब्राह्मणे ऋतं ब्राह्मं जनयन्तः देवा एतद्ब्रवन् यद्वैतं ब्राह्मणो विद्यात् स देवा संपदेः ग्रीष्मदे लक्ष्मीश्च पत्न्यौ होरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अस्मिनौ व्याप्तं विष्टं मनिषाण अमं मनिषाण सर्वं मनिषाण सहस्रशीर्षं देवं विश्वाख्यं विश्वसम्भुवं विश्वनारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वदपरमां नित्यं विश्वनारायणं हरिं भवदेवते पदिं विश्वशास्त्रजं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो नारायणपरः नारायणपरो ध्याता ध्यानं नारायणपरः यच्चलिङ्गं सर्वं दृश्यते श्रूयते वा अन्तर्बहिर्सर्वं व्याभ्यनारायणस्थितः अनन्तमं जगं कविं रुद्रेन्द्रं सर्वं पद्मघोषप्रतीघासप्रतिगं चासुतोमुखं बालबालां बालस्यस्याक्षरं मगदे सन्ततं शिलाविलम्बस्यां सजीवं तस्यान्ये शिरगं तद्विमध्यनिशिलानियोः नीलदोषमद्धन्दां धुल्लेगे भवास्वरा नीवानस्तुहमद्धन्मे वेदावाः तनुमा तस्याः शिखाजामध्ये परमात्मा भक्तिदः स ब्रह्मस्य शिवस्य हरिश्चेन्द्रसूक्षरं परमस्वराट् विभटुं सत्यं परं ब्रह्मपुरुषं कृष्णपिङ्गळं
ऊर्ध्वने गंगरूपाख्यं विश्वरूपाय वै नमो नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् 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 स्वाहा 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 नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि Please get the blessings from Lord Balarama. He is already there in the Agni. तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् Balarama is already there in the Agni. Please get the blessings. तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि Krishna is also coming in the Agni. नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो Wherever Lord Balarama is there, Krishna will come. वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा नारायणाय विद्महे 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 वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ओम वसुदेव सुताय विद्महे बलरामाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा वसुदेव पुत्राय विद्महे बलरामाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा वसुदेव पुत्राय विद्महे बलरामाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा वसुदेव पुत्राय विद्महे बलरामाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा वसुदेव पुत्राय विद्महे बलरामाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा वसुदेव पुत्राय विद्महे बलरामाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा वसुदेव पुत्राय विद्महे बलरामाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा वसुदेव पुत्राय विद्महे बलरामाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा वसुदेव पुत्राय विद्महे बलरामाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा वसुदेव पुत्राय विद्महे बलरामाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा वसुदेव पुत्राय विद्महे बलरामाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा वसुदेव पुत्राय विद्महे बलरामाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा वसुदेव पुत्राय विद्महे बलरामाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा वसुदेव पुत्राय विद्महे बलरामाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा वसुदेव पुत्राय विद्महे बलरामाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा वसुदेव पुत्राय विद्महे बलरामाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा वसुदेव पुत्राय विद्महे बलरामाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा वसुदेव पुत्राय विद्महे बलरामाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा वसुदेव पुत्राय विद्महे बलरामाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा वसुदेव पुत्राय विद्महे बलरामाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा वसुदेव पुत्राय विद्महे बलरामाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा वसुदेव पुत्राय विद्महे बलरामाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा वसुदेव पुत्राय विद्महे बलरामाय धीमहि Lord Krishna Balarama likes sweets. वसुदेव पुत्राय विद्महे बलरामाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा वसुदेव पुत्राय विद्महे बलरामाय धीमहि वसुदेव पुत्राय विद्महे बलरामाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा वसुदेव पुत्राय विद्महे बलरामाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा वसुदेव पुत्राय विद्महे बलरामाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा वसुदेव पुत्राय विद्महे बलरामाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा वसुदेव पुत्राय विद्महे बलरामाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा वसुदेव पुत्राय विद्महे बलरामाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ओम हम बलरामाय 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 स्वाहा
बम बलरामाय स्वाहा ओम 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 बलराम महाविष्णवे नमो नमः स्वाहा பலராமர் வந்து மாயை சக்தியினால ரோகிணி வைத்திற்கு மாற்றப்பட்டதனால இன்றைய தினம் செவ்வாய்க்கிழமையும் கூடிய துவாதசி திதி. அதனால மாயின்னு சொன்னாங்க துர்கை அவதாரம். அதனால துர்கா சூக்தத்தினால ஹோமம். So today we are going to do Durga Shutta Homam because Maya Devi transferred Lord Balarama from the womb of Devaki to the womb of Rohini. So since Maya Devi is Durga, so we are also going to do the ahutis for Durga and to invoke Durga in this Agni. Already Lord Balarama is there, along with it we have also witnessed Krishna came. Now we are going to invoke Durga in Agni. துர்கைக்கு அருகம்புல்லால ஹோமம். அருகம்புல்லே மகாகணபதிக்கும் சேர்ந்தது, பாவத்தை தீர்க்கக்கூடியது. So we are doing it with grass which will solve any obstacles in your life. ओम जातवेदसे सुनवावसो मरादि यतोडितः दिवेदः सनापड़ दुर्गाणि विश्वानावे वसुन्तुं दुरिताद्यग्निः वसुदेवपुत्राय विद्महे बलरामाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा पावन्यवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफले दुष्टाः दुर्गां देवीं चरणमहं प्रपद्ये सुधरसिधरसे नमः ओम वसुदेवपुत्राय विद्महे बलरामाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा अग्ने त्वं वारयामद्यो अस्मान् स्वस्तिभिर्दुर्गाणि विश्वाहा ूर्ध्वमुद्वेगुलानुर्वेगवादोगायनयाय संयोः बलरामाय विद्महे वसुपुत्राय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा अग्ने त्वं वारयामद्यो अस्मान् स्वस्तिभिर्दुर्गाणि विश्वाहा ऊर्ध्वमुद्वेगुलानुर्वेगवादोगायनयाय संयोः वसुदेवपुत्राय विद्महे बलरामाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा स्वानिनो दुर्गः जातवेदस्य तन्ननावादुरितादिवृषे अग्ने त्वं वारयामद्यो अस्मान् स्वस्तिभिर्दुर्गाणि विश्वाहा ऊर्ध्वमुद्वेगुलानुर्वेगवादोगायनयाय संयोः स्वानिनो दुर्गः जातवेदस्य तन्ननावादुरितादिवृषे बलरामाय विद्महे वसुपुत्राय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा अग्ने त्वं वारयामद्यो अस्मान् स्वस्तिभिर्दुर्गाणि विश्वाहा ऊर्ध्वमुद्वेगुलानुर्वेगवादोगायनयाय संयोः स्वानिनो दुर्गः जातवेदस्य तन्ननावादुरितादिवृषे अग्ने गन्धर्वण्मणदागणानमस्माकं बोध्यपिताधूनां मृदनागिदं सकमानमुग्रमग्निभुमे प्रभातस्साद् वसुदेवपुत्राय विद्महे बलरामाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा अग्ने त्वं वारयामद्यो अस्मान् स्वस्तिभिर्दुर्गाणि विश्वाहा प्रत्नोषिकवेद्यो परेसना सहोदारभ्य ससुत्ति स्वाञ्जाग्ने धर्मं विप्रयस्वासुभ्यं जसो भगवाय विश्वा वसुदेवपुत्राय विद्महे बलरामाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा गोभिर्दुष्टमभिडोर्णि तन्दवेन्द्रविड्डोर्णसञ्चरेम नागस्तरुटमसंसहिष्टमे लोकैकमादयन्तां वसुदेवपुत्राय विद्महे बलरामाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् वसुदेवपुत्राय विद्महे बलरामाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् वसुदेवपुत्राय विद्महे बलरामाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् वसुदेवपुत्राय विद्महे बलरामाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ओम मधर्मे मधुगैडवज्ञमरिड प्राणावहरोद्यमे केला निर्मित धूम्रलोचनवते हेचण्डमुण्डादिनी विशेषे कृतरक्तबीजधनुजे नित्येनि शुम्भावगे शुम्भब्दं सरि दुर्धराजदुरितं दुर्गे नमस्ते अम्बिके नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्. அதனாலதான் துர்கைக்கு வந்து விஷ்ணு துர்கைங்கிற ஒரு பேர் உண்டு. That's why we have Durga is having another name as Vishnu Durga. ओम नमो देवी महादेवी शिवाय नमः ओम प्रकृति भद्राणी नीला प्रदास्पदां स्वाहा नमो देवी महादेवी शिवाय नमः ओम प्रकृति भद्राणी नीला प्रदास्पदां स्वाहा Balaram, Krishna, परमेश्वरी and Durga, who is already there in Agni. Now we are going to invoke goddess Mahalakshmi
we are going to invoke Goddess Mahalakshmi, who is the consort of Lord Mahavishnu. So we are going to invoke her with lotus flowers dipped with ghee. So please witness Goddess Mahalakshmi, the treasurer of wealth. So all of this will give you material wealth and prosperity in your life. We have Lord Krishna, Balarama, the supreme God. Lord Krishna is already there. Along with the Balarama is also there, the avatar of him. And Durga is already there, the Maya Devi, who is controlling this cosmos. And now we are going to witness Goddess Mahalakshmi, who is a consort of the supreme God Mahavishnu. So we are going to invoke Goddess Mahalakshmi with this Sri Shuktam. So we are going to do the Sri Shuktam Homam. So Mahalakshmi will come to us in the Agni to grant us the boons and blessings. Please pray for please do your prayers. Make sure you get the maximum benefit from this yajna. All your prayers will get solved. This is a time you need to do the prayer because gods are already there in Agni. So now we are going to do the Lakshmi Shukta, the Shri Shukta Homa. யசோதையின் வயிற்றில் அவதரித்ததினால் மாயாதேவிக்கு காளி, மகமாயி, சண்டிகேஸ்வரி அப்படின்லாம் சொல்றோம். ஸோ மகாவிஷ்ணுடைய உத்தரவுப்படி மாயையாக தேவகியினுடைய வயிற்றிலிருந்து யசோதா வயிற்றுக்கு மாற்றியதனால அவளுக்கு மாயை என்று பெயர். அந்த மாயாவாக நீ இருந்து எல்லா இடத்திற்கும் எல்லாருக்கும் நல்லது செய்யும் சொல்லி மகாவிஷ்ணு உத்தரவிடுகிறார். அதனால தான் இந்த துர்க்கை, காளி இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப விசேஷமாக நமக்கு செய்யணும். Mahavishnu instructed Durga during the Krishna Avada to transfer as you know, to transfer Balarama to the room of Rohini. So she is also called as Maya Devi. So Maya Devi is also the form of Kali, the divine mothers, the Dasamaha with their rupas. So who is also getting, Maya Devi is getting born in the Yasoda's womb. So it's also only for a temporary time until the issues are solved from Kamsa. So now we are going to witness Mahalakshmi. Already you have got the blessing from Durga, who is a form of Mahakali and other Dasamaha Vidyas. The Mahamayi Mahamayi, who is called Maya Devi, is very, very auspicious. So we already invoked her in this Agni. Now we are going to invoke Mahalakshmi with Sri Shuktam. Om Hiranyavardham Haridim Swarnayasrajam Chandram Hiranmayim Lakshmim Jatavedo Mamaha Narayana Vidmahe Vasudevaya Dhimahi Tanno Vishnu Prachodayat Swaha Tam Mahavagajatavedo Lakshmim Manapagaminihim Yasyam Hiranyam Vindheyam Kavasvam Purushadakam Narayana Vidmahe Vasudevaya Dhimahi Tanno Vishnu Prachodayat Swaha Aswapurva Matavadyam Stinada Prabodhinim Sriyam Devi Vakvaye Srirma Devi Dushatam Om Narayana Vidmahe Vasudevaya Dhimahi Tanno Vishnu Prachodayat Swaha Kam Sosmita Hiranya Pragara Madram Jalandim Driptam Tarpayandim Om Narayana Vidmahe Vasudevaya Dhimahi Tanno Vishnu Prachodayat Swaha Kam Sosmita Hiranya Pragara Madram Jalandim Driptam Tarpayandim Vadvesidam Bhagavarnam Ta Vimabhakvaye Sriyam Om Narayana Vidmahe Vasudevaya Dhimahi Tanno Vishnu Prachodayat Swaha Tam Padvesdam Bhagavardam Ta Vimabhakvaye Sriyam Chandram Prabhasam Visasat Jalantim Sriyam Loke Devajutta Udaram Narayana Vidmahe Vasudevaya Dhimahi Tanno Vishnu Prachodayat Swaha Tam Padvinim Charanam Prabhati Lakshmi Rupyanasya Dam Swavarne Narayana Vidmahe Vasudevaya Dhimahi Tanno Vishnu Prachodayat Swaha Narayana Vidmahe Vasudevaya Tam Mahavagajatavedo Lakshmim Adram Vishkarnim Vittivikalam Vatmamarini Chandram Hiranmayim Lakshmim Jatavedo Mahavagaswaha Adram Vishkarnim Vittivikalam Vatmamarini Chandram Hiranmayim Lakshmim Jatavedo Mahavagaswaha Tam Padminim Charanam Prabhati Lakshmi Rupyanasya Dam Swavarne Adityavarne Vasodi Jato Vanaspadistav Vrittoda Vilvaha Tasya Padayana Prasaduntu Mayantaraya Cha Bhagya Lakshmi Swaha Narayana
विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा उपैदुमां देव सह कीर्तितमणिना सह प्रादुर्भूतो श्रीराट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृत्युं ददातु मे नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा शुद्धिभासावनां ज्येष्ठा लक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूदिवसवद्दन्त सर्वान्